Welcome to English Easy viewers. It is the second morning of our trip at Shardah. It is very beautiful all around. You can see here the mountains, the clouds, the river, and continuous drizzling too. All this is making the scenery fascinating and charming. Most of the group members are still sleeping, but I have to enjoy this morning. That's why I am here outside my hotel. Let's enjoy this beautiful morning. आइए मैं आपको सुबह का ये मंजर एक दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। Wow, it is beautiful. Nature is always soothing. आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत मंजर है इस साइड से भी, और ड्रिजलिंग हो रही है, काफ़ी देर से हो रही है। आई थिंक कि मैं जब 5 बजे उठा था उस वक्त भी बूंदाबांदी जारी थी और अभी भी मुसलसल हो ही रही है। और व्यूअर्स, यहाँ शारदा से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है कि हम यहाँ से अड़ंकेल जाएं जीपों के ज़रिए से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है रत्ती गली का, लेकिन कल पता चला था कि रत्ती गली के रास्ते में बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो चुकी है। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है नूरी टॉप का। तो हम में से अक्सरियत ने आज के लिए नूरी टॉप का इंतखाब किया है। और मेरे नज़दीक जो उसकी वजह कि मैंने इसका फ़ैसला क्यों किया, मैंने क्यों पसंद किया कि नूरी टॉप जाया जाए, क्योंकि मैं इसका नाम बहुत बार उस दूसरे कागान नारान वाले रूट पे भी सुन चुका हूँ। जब नारान से आगे हम जलखड़ पहुँचते हैं तो वहाँ जलखड़ से एक रास्ता अलग हो जाता है और वो नूरी टॉप की तरफ जाता है। और ये बात, इसका नाम मैं बार बार सुन चुका हूँ, तो इसलिए मैंने भी वोट दिया नूरी टॉप के हक़ में। तो आइए अब हम कोशिश करते हैं कि ज़रा सुबह सुबह दरिया के किनारे चलें और बहते हुए पानी से महजूज़ हो सकें। मैं आपको भी यहाँ से साथ साथ ही लेके चलता हूँ। ये सामने दरिया है और ये है वो रास्ता जहाँ से गुज़र के हमने दरिया तक पहुँचना है। तो रास्ता ज़रा स्लिपरी हो गया है बूंदाबांदी की वजह से, तो मैं ज़रा एहतियात से उतरूँगा। ये देखिए, यहाँ से मैं आया हूँ इस रास्ते से। ये हमारा होटल है और इससे पीछे आपको और दूसरे बहुत से होटल भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से हाँ जी थैंक यू। तो ये हम देखें, अभी भाई रास्ते में मिले थे, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट सीन्स हियर, वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट सीन। मुझे ज़रा एहतियात से चलना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हुई है जिसकी वजह से रास्ता स्लिपरी है, तो इसलिए मुझे ज़रा स्लो जाना पड़ रहा है। ये लीजिए, ये दरिया है और ये सीनरी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम। ये जी हम आ गए तकरीबन दरिया के किनारे। बहता हुआ पानी, सब्ज़ा पहाड़ और ऊपर से बरसती हुई हल्की हल्की फुहार। ये आई थिंक के पानी की आवाज़ भी आप सुन सकेंगे। ये इस साइड पे भी देखें, वो पहाड़ और बादल कहाँ नीचे तक आए हुए हैं। एक बार जूम करके भी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और ये हमारी बैक साइड, ज़बरदस्त, वेरी ब्यूटीफुल।
कमाल। और ये है हमारा दरियाए नीलम या दरियाए नीलम का कोई हिस्सा है। जबरदस्त, बहुत ही खूब। और ये हूँ मैं, अपने इर्द गिर्द में दिखा दूँ आपको। सामने पहाड़ हैं, फितरत का ये हुस्न देख के आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि सुभान अल्लाह, कि इनका क्रिएटर, इस ब्यूटी को बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा। और कमाल है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, हम इसकी तारीफ़ करने से भी कासिर हैं। जी, ये शारदा में है हम। सुबह का वक्त है और सुबह जब मैंने मुंह धोया या वज़ू किया तो इतना ठंडा पानी था कि मेरे हाथ अब तक सुन हुए हैं। ये बहता हुआ दरिया, सामने पहाड़, बादल, सब्ज़ा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये जाते हुए एक बार फिर होटल की तरफ वापस जाते हुए, ये देखिए जी, ये रास्ता है और इधर से एहतियात से चलना पड़ेगा, पत्थर गीले हैं। और ये कमाल, ज़बरदस्त। आज हम चलेंगे बहुत ही खूबसूरत पॉइंट नूरी टॉप पर, जिसके लिए जीपें तैयार खड़ी हैं, लेकिन अभी हमारे बहुत से साथी तैयार होकर बाहर नहीं आए हैं। इसलिए जब तक रवानगी नहीं होती उस वक्त तक थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। आइए आप भी इन फ़ोटोग्राफ से लुत्फ़अंदोज़ होइए। We all have taken our breakfast and the jeeps are ready, but some of the group members are not ready yet. So viewers, while waiting, let us enjoy some photography. At last, at 11 o'clock, we departed for Noori Top. The whole journey to Noori Top is very beautiful. It is full of the scenes of gushing rivers, sky-high mountains, and musical and fascinating waterfalls. We are going to pass through all this. During the journey, we passed by at least 9 to 10 waterfalls. 7 of them were of remarkable size, whereas the 3 were very small. But even then, they were adding to the beauty of the scenery all around. For a while, we stayed at a village, and our guide, Mr. Ahmed, told us that there will be no canteen or any eatables available on the Noori Top. That's why those who want to buy something to eat or drink, they must buy from here. After the stay of 20 minutes, the journey again continued. All of us were enjoying the journey. We made a lot of photographs
a lot of videos and time lapses, and let's enjoy one of the time lapses and other videos too. From Shardah to Noori top, it is about 3 hours jeep trek, and this trek consists of smooth road, rocky patches, sharp turns, and very rough paths. I would like to share with you that during this journey I have to pass the most dangerous moment or most dangerous point of my life also. When the driver stopped the jeep before this rough rocky path, I have observed the danger in front. That's why I asked all the group members present in that jeep to evacuate the jeep, cross that patch on foot. So all of them left the jeep, but when it was my turn to leave the jeep, the driver came in and asked me to sit down there. Don't know what was the reason, but the first thought to my mind was that he doesn't want to die alone. That's why he asked me to sit down there. But anyway, I got ready to accompany him through this dangerous path. See in the video, here is the point that was most dangerous. You can't feel this danger in the video until you sit on the window side in the jeep. When the jeep crossed that patch, I thanked God, and my partner Mr. Rana Shafiq also told me that he has read 3 times Ayatul Kursi and 4 times he was reciting that ayah. So dangerous that point was. Again, all the passengers got on the jeep and the journey continued. And at last, after the journey of 3 hours, at 2 o'clock we reached the beautiful, most fascinating top, Noori top. Beautiful green carpet of grass motivates everyone to jump, to run, and to make rolls also. It motivated me to perform first kata of Bando martial arts, Kenzi kata. You also enjoy it. आप भी मुलाहाजा फरमाइए. Then we rushed to the glacier, and after that we climbed up
with the waterfall step by step. Each point was very beautiful and fascinating, and we enjoyed it wholeheartedly and made a lot of photographs. Then we climbed down the mountain and crossed that glacier also. And then there was a stream. Everybody wanted to cross that stream, but the pressure was so high that everyone has to think about it before crossing that stream. कितनी दूर तक जाना है Every one of us crossed that stream and then made a lot of photographs and खल्दून साहब और शहरबानों एक बार फिर उस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए। संभल के जाएं। आइए अब मैं आपको बहुत सी खूबसूरत पिक्स और बहुत ही खूबसूरत आबशारें दिखाता हूँ। वीडियो चल रही थी, बंद कर दी। वीडियो जल्दी करने में अब ठीक है, चल रही है। उतरिए शादी उतार दिया करो ऐसे बस ऊपर को करें थोड़ा। मैं बता रहा हूँ आपको सर्दी में देंगे एहतियात कीजिए। after enjoyment of 2 hours, we started our journey back to our hotels. And just after the journey of 2 hours and 40 minutes, we reached our hotel at Shardah. Shardah is also a very beautiful place, and here the facilities of rafting and boating are also available. That's really a thrilling experience. I hope so, viewers, that you will also like to visit these beautiful places in Pakistan. Subscribe my channel and like and share the video. Thank you very much, and wait for the third day journey. And on third day we are going to visit the most beautiful, I mean to say, Kundal Shahi waterfall. So wait for third day video. Thank you very much.